हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरे इन पर्ल। सो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द लेंथ और द साइज ऑफ द एरे, सो वी कैन से दैट द साइज ऑफ द एरे इज डिटरमाइंड विद अ स्केलर कंटेंट ऑफ द एरेज. So the returned value will be always one greater than the largest indexed. So therefore, we can say that the size of the array will be the maximum index of the array plus 1. So, we can implement one simple example related to the size of the array through which you can see how it works. So, now move to the editor. So, I will start my Perl IDE, that is the Padre. I'm going to open it. So let's get started. I'm increasing the font. So यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है रिगार्डिंग द साइज ऑफ एरे. So I'm creating an array first with the @ sign and array. You can write anything inside inside the array. You can write a character, you can write anything. Suppose I am writing hello, how are you. I am dividing this string into a different element. So here there are 4 elements in array. So I created an array and in which there are 4 elements. Okay. So suppose if I want to create or redefine the size, suppose there are 4 elements in an array, or I'm adding one more element, that is the numerical element, into the पर्टिकुलर एरे. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एरे एलिमेंट है हम उसमें टोटल है 4 एलिमेंट्स. तो एरे साइज एरे इंडेक्स मैक्सिमम एलिमेंट इज ऑन द इंडेक्स 0 1 2 3. ओके, बट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4, बट द इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट इज 3. So we can say that the size of the array will be 1 greater than the maximum index of the array. So that way I have what I did, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक नंबर है 4th एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मीन्स एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला है पोजीशन 6 पे, बट जो इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 है, इंडेक्स पोजीशन इज 3. सो मैंने एक एक्स्ट्रा इसमें यहाँ पे ऐड किया है, मींस इंडेक्स नंबर अगर मैं 4 पे कुछ इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 पे है, 4 इज ब्लैंक एंड 5 इज ब्लैंक. ओके, और मैंने 6 पोजीशन पे डाला है. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे. तो अब अगर मैं यहाँ से साइज फाइंड करती हूँ, इफ आई वांट टू फाइंड द साइज, वेट अ मिनट. Oh, the program get lost. I have to create it again. So I'm creating the same array. Okay, equal to hello, how are you. Okay, now I'm going to create an array with the index element 6 is equals to 4 any element, then size is equals to @array. This will be the size. Okay, so if you want to find the maximum index value, so it will be
number of arrays. This is the predefined syntax. Then print, we are going to print the size of array. Dollar size contains the size of array. Now I'm going to print the maximum index. So which will be stored in the index max. You can also use the save functions instead of print. So that way you don't need to /n character sign. I'm going to save it. And a strawberry folder inside Perl and inside bin folder. So len.pl से सेव कर रही हूँ मैं प्रोग्राम. ओके, तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं. So wait a minute. हाँ, you can see that the size of the array will be 7. Okay, and the maximum index value will be 6. So here you can see that the currently the array contains 1, 2, 3, 4 elements and 1 is 5 elements. So currently array contains 5 elements, but the index is maximum index is 6 because the fourth element, the element 4 is stored in the position 6. So here we can get this position. So here suppose I am creating a new slide. Okay, so I am creating some boxes for denoting the cell of the array. So suppose I have created first box and this is the second box. Okay, and this is the another box, this is another, and 1, 2, 3 and 6. So here you can see that these are the elements. So when I say now, अब इसको अगर मैं labeling दूं, this was the hello, it contains the hello message, and this is contain how message, and this is contains our message, and this is contains you message. Okay, so it is the first index element of an array will stored in the index position 0, second will be on 1, third will be on 2, and fourth will be on 3. So fifth, sixth, on the sixth index we stored 4. Okay, so this will be the extra one. So when we are finding the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, I stored the element 4 in the 6th position. Okay, so there are only 2 array spacings are in between the array. So there are total number of elements in that array is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So currently total number of spacing are 7, but the total number of elements are 1, 2, 3, 4, 5. तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो लेंथ है एरे का will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and maximum index size will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो उस केस में आप देख सकते हो, अगर हम बात करें आउटपुट की तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एरे क्रिएट हुआ है वो टोटल साइज उसका हुआ है 7 और जो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है क्योंकि वो 0 से शुरू होती है, इस वजह से हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स होगा लास्ट एलिमेंट का वो होगा 6. बट जो हमारा टोटल साइज ऑफ एरे होगा वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो इस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्पेसिंग क्रिएट की गई है. ठीक है, तो इस बेस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं, हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो
हमारे पास साइज होता है, साइज ऑफ एरे is equal to the maximum number of maximum index number plus 1. So we can come to the solutions that the size of the array or the length of the array is equal to the maximum index number plus 1. ओके, सो हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ अपने. Now comes to some array functions. So there are some array functions through which you can add or remove the elements from an array using some array functions. The first function is push. The second function is pop that you have used with the stack functions. So in a real life जब हम stack use करते हैं, you know the stack has a first in last out function and through which you can use a similar way you can use these array push and pop functions. And push function will append a new element at the end of the array, where the pop element will pop the last element from an array. So this is the addition function and the pop is the deletion functions. And through the shift function you can shift the array functions. You can remove the leftmost element of an array. So through shift you can remove the leftmost element of an array. Through the unshift you can add the element at the start of the array or at the beginning of the array. Okay, so let's implement these functions. So now I'm going to create some simple code for this. I'm creating an array. Any value you can take. Suppose I'm taking a colors like red. So I'm taking red, green, blue. Okay. So this is my array. So अब मुझे suppose मुझे push करना है. I want to push color pink. I want to push pink color. Okay. So what I have to do, I have to use the command push and then @array name, and then I have to mention the color that I want to push. Suppose I want to push pink color, then this color will be pushed in the where it can be pushed. The pink color will be pushed on the top of the stack. Okay, so when I want to see this result, I will use the function print array. So for printing the whole array you have to use @ that I mentioned before. So let's check an output. So here you can see that the red, green, blue were the existing colors in an array, and the new color is stored at the top of the stack. So you can see, आप ये जो आपका रिजल्ट आउटपुट आया, आप इसको वर्टिकली सोचो. मतलब जो रेड है वो स्टैक में पोजीशन 0 पे है, ग्रीन है वो स्टैक में पोजीशन 1 पे है, ब्लू है पोजीशन 2 पे है, और जो पिंक है वो पोजीशन 3 पे है. तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका जो सबसे नीचे का एलिमेंट है, सबसे बेलो एलिमेंट है, वो आपका सबसे पहले ऐड हुआ है. तो हमारा जो भी नया एलिमेंट आएगा वो सबसे लास्ट में ऐड होगा. ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सपोज आपको कोई एलिमेंट पॉप करना है, इफ यू वांट टू पॉप समथिंग, सो आप यूज करोगे @array. जस्ट ये आपको लिखना है और फिर से आपको ये एलिमेंट प्रिंट करा देना है. ठीक है, you will print this, copy and then paste.
and then save.